30%. Instead of losing a job, you will not recruit more people. You will train your own people, become more efficient, and get the work done out. So you're not losing job. Usually, in general, you not find the organization losing jobs. What you would like to do is to make them more efficient. So this is an example we have been using in our organization also. The efficiency which we have seen in the last couple of years, vis-a-vis period cost. Our lesser team has been able to give better results by using the tools only, by using this AI. The basic thing which we see is okay. I think it's a temporary thing which people think because jobs are getting lost for different reasons. It's not because of AI only. AI, yes, companies are not recruiting more people because they have a leverage of 30% now to utilize the existing force. And they have delayed the further recruitments. That doesn't mean you're losing a business in the market. But the market is also very controlled at this moment. That's the reason some industries are losing jobs. So in time, it's going to be an efficient thing. It's going to improve our human capability. We're going to get more efficient. We're going to do more things out of it. So you all listen to the words of AI. If you go little deeper, it is actually generative AI which is making what you were explaining very nicely. So basically, you train your computer to behave like a human, generate things like what a human does. So you are making them as your tool today. You are using a phone today so easily, you can do a lot of things. 15 years back, where it's a big Expo, we had pages. So technology moves, that's fine, but you become more efficient today. Somebody was asking me, because we are in business for 30 years, and I met somebody from APC. So he said, yeah, I'm doing APC. So I said, yeah, I think I've been interacting with APC. Let me check my data. Who are those people? I just found out it was X person, Y person. Yes, sir, I was reporting to him 5 years back. I was reporting to him 10 years back. He now moved to Canada. That guy. So I have already my database here. So yeah, good to make it next level now. Then you just say something, who is he? I need publicity, you've got vision things coming up, I want to see something. So it's actually going to help you only, actually speaking. So I don't think, what I was taking an interview today in the morning on a graduate guy in the company. Yeah. What do you do here? Do you know what AI? He said, no, sir. Then looking for a job. You have to make yourself efficient first, yeah. Go and learn. You don't need today. What do you need to learn? Sir, course करना है. क्यों course करना है? क्या YouTube में table नहीं है? क्या time नहीं है? सर जहाँ मैं जॉब कर रहा था सुबह शाम 10 घंटे बाकी 14 घंटे क्या करते हो 6 घंटे सो लेते हो 2 घंटे दिन में निकाल सकते हैं सेल्फ लर्निंग के लिए ब्लेम करते हो आप लोगों को कि जॉब नहीं मिलेगा दैट इज नॉट द राइट अप्रोच एक्चुअली we all need to understand, educate ourselves and make ourselves more efficient. That's the only way. Otherwise, इसको काम नहीं करेगा. That's my understanding. That's like asking a contact center. When the contact centers are there, you have lots of people, agents, who are answering calls. If you look at it, every agent has a cost. It's the human cost which is there. Cost, associated cost associated with it. Many of the times what happens is somebody is calling out and he reaches a voicemail or he reaches a fax tone or somebody is not there. Still that agent's line is busy. So if you look at normal contact centers who are using these sort of normal old technologies, the 20 to 30% of the time goes waste because you do not get connected to people. Now, when you use AI around it, you can actually reduce almost 80% of what an agent does because basic things like, for example, correcting the name details, having some specific questions answered in the particular field of business, all those things can actually be gathered by AI. And AI can also suggest, various answers and ways on how they can address things. And then an agent comes in only for the time when something which is not or out of the ordinary. So therefore, when you're saving so much of time, you're also reducing your cost. And machine learning, as the system learns and becomes more intelligent, that 70% becomes 80%, 90% of what the system does as compared to what a physical person is doing. That's one. Second, things where they can listen to or you see the tone in which the person is talking, you can actually do things like sentiment analysis. Whether the person who's calling, imagine you call 100 police people, right? And the system can tell you whether that person is really in an emergency or it's a hoax call. So if it's an emergency, it will transfer to an actual police maybe at the top of the call as an emergency. If it is somebody who's asking for information, it will take it to the end of the queue.
These are things which AI assists in your everyday life. And I think, and when you collect all this data, this huge data becomes part of big data, which gives you the opportunity of analyzing all this and then developing patterns of, what is the reporting that you get out of it. So you can see that when you are putting money behind making a system, what is the actual ROI you are getting as versus what you perceive to be getting. So I think that's some of the points which are there from a communication standpoint, which I think we are using day in day out, which assists. What is effective to you? So, for an example, I think for this audience, a very simple example I tell you: you have a PDF of 40 pages, and you need to create a PPT in 2 hours and give it to somebody in the management or on a school. You just tell there are tools today available. Just have to give a command. Make a 5 page PPT or this. Summarize it and then do it in 15 minutes, 30 minutes and create a PPT with using all the relevant images, pictures, videos to the subject topic. So these are kind of powerful things which are today happening and they're going to change your day-to-day life. And the only way to keep you, up to date in this industry is that you should keep yourself updated with the technology. So AI is one thing I suggest everyone to get used to it as soon as possible. Want to compete in the personally. Government of India has come up with the bill of DPCP, Data Protection and Data Privacy Bill, जहाँ पे इंडिया में खासकर जो हमारा डेटा है वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, खासकर हमारा पर्सनल डेटा उसकी सिक्योरिटी के लिए देयर इज ए लॉ कम्स अप एंड वहाँ पे उस लॉ के में जितने भी हमारे बड़े एंटरप्राइजेस हैं या जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपका डेटा स्टोर करते हैं दे हैव टू मेक ए कंप्लायंस कि आपका डेटा जो है वो सिक्योरली स्टोर है और वो शेयरेबल नहीं है. अभी फॉर एग्जांपल आपने किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया, आफ्टर 2 or 3 days you will getting a calls from another bank, you need a loan और आपको लोन चाहिए क्या, फिर आप उससे केवाईसी की पूछेंगे तो मे बी इट्स नॉट ए बिग सरप्राइज, हो गया नहीं आई हैव योर पैन नंबर ऑलरेडी. उसके बाद वो आपका पैन नंबर कहाँ से गया, उसके पास आपका आधार नंबर भी है, he knows every your financial information. So इन सब की डेटा सिक्योरिटी के लिए there is a law comes up and उस लॉ में हमें जितना भी डेटा स्टोरेज का कंप्लायंस है उसको मैनेज करना रहेगा एंड AI and other engines will be must be there to manage that compliance. आपका आधार नंबर, पैन नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, इट मस्ट बी सिक्योर्ड विद एनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? एंड ऑन द रिक्वेस्ट दे शुड बी डिलीट फ्रॉम देयर ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस, लाइक GDPR. तो आपका जो डेटा है वो आपकी रिक्वेस्ट पे, आपने अगर कहीं लोन के लिए अप्लाई किया या आपने किसी और फोन नंबर के लिए अप्लाई किया तो आपकी रिक्वेस्ट पे वो डेटा वहां से रिमूव होना चाहिए. अगर वो डेटा आपका कहीं मिसयूज होता है तो यू विल बी डेफिनेटली विक्टिम ऑफ ए साइबर अटैक, क्योंकि जितने भी आपके व्हाट्सएप पे या फिर आपका ईमेल्स के ऊपर जितने भी आपको ईमेल्स आते हैं लाइक लॉटरी के मेल और मैसेजेस आते हैं वो आपके डेटा लीकेज के ऊपर है, राइट? तो ये सब चीजें जो है इम्पैक्ट करेगी हमारे बिग डेटा पे कि आपका डेटा बेस जितना बड़ा होता जाएगा हमें उतनी ही डेटा सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी. दैट्स व्हाई हमारी गवर्नमेंट ने भी इसके लिए इनिशिएटिव लिया है और दे आर इंट्रोड्यूसिंग द डीपीडीपी बिल जो 2017 से जो है इसकी तैयारी चल रही थी. नाउ इट्स कम अप विद द फर्स्ट ड्राफ्ट और नेक्स्ट गवर्नमेंट साइकिल के अंदर आपको ये इम्प्लीमेंट होगा और जितने भी बैंक्स हैं, NBFCs हैं और बाकी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्सनल डेटा स्टोर करते हैं उनको AI ड्रिवन टूल्स यूज करने रहेंगे आपके बिग डेटा को मैनेज करने के. उसके ट्रायल्स वैसे होते हैं तो उनके फोन को ATS STF टैप करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, राइट सुनते हैं और उसके रिकॉर्डिंग को भी स्टोर रखा जाता है. तो निरॉन ने लगभग 200 सर्वर्स इंडिया में डिप्लॉय किए हैं दैट्स कॉल्ड इंटरसेप्टर एंड हम उन सारे
कॉल्स को रिकॉर्ड करते हैं, रियल टाइम अलर्ट एनालिसिस लेते हैं. So that project was about 2 years, and now we are adding AI to the same project. अभी का रियलिस्टिक चैलेंज क्या है उस डिपार्टमेंट या अदर किसी भी डिपार्टमेंट का जो कि ये इस टाइप के एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहे हैं. एवरी डे दे रिसीव 5,000 10,000 कॉल्स एंड लिमिटेड स्टाफ है, 2 या 4 लोग हैं. रियल टाइम कितने कॉल्स को वो मॉनिटर कर सकते हैं? 5, 10, इसके आगे कैपेसिटी नहीं है वहां. एंड रेस्ट ऑफ 95 कॉल्स वो सिर्फ रिकॉर्ड हो रहे हैं, उसको सुनने में उनको 10 साल लगे. दिस इज ह्यूज डेटा. और उनको एग्जैक्टली नहीं पता कि किस कॉल पे कब क्या बात हुआ था, उसको कैसे एनालाइज किया जाए. देयर इज नो मैकेनिज्म. देन अगेन वी सेट विद देम रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया. हमें समझ में आया कि हम यहाँ पे वैलिडेशन कर सकते हैं. देन वी आर स्टार्टेड डेवलपिंग ASR, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन. And now this system उनको डिलीवर होने वाला might be in next 1 year. We will see they are equipped with all these features. So एक्यूरेटली हमने हथियार का यूज किया, बम का यूज किया. कितने कॉलर्स ने कितनी बार किस कॉल के किस पर्टिकुलर सेकंड तक यूज किया है, इट्स एनालाइज. एंड नॉट ओनली द एनालाइज, ट्रिगर. जयपुर के इस लोकेशन से कॉल था BTS का, ये इसने हथियार का यूज किया था, इमीडिएटली ट्रिगर टू नियरबाई पुलिस स्टेशन और ADS टीम. दे नो एक्चुअली वो कॉल ओरिजिनेट करने वाला, कम्युनिकेशन करने वाला कहाँ. सो दिस इज द वे AI is helping transformation of government agencies और डे बाई डे. इसके अलावा इन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे कि हम हेल्प कर रहे हैं कॉर्पोरेट्स को या अदर डिपार्टमेंट्स को. लाइक बेसिक एग्जांपल ऑफ AI. आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग हैं, दे ऑल आर टॉकिंग टू द. हम चाहते हैं उन सबका कॉमन वॉइस हो. सो इट्स अगेन ASR मैकेनिज्म. सबके वॉइस टोन को पिच को मैच किया और उसके अकॉर्डिंग डिलीवर किया. सो देयर आर इन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, इन नंबर ऑफ सिनेरियोज. एंड 3 लाख बिजनेस यूजर ऑन प्लेटफॉर्म. आइडिया इज कि अगले 5-6 साल में इंडिया के ऑल SMEs, which is around 60 million SMEs, they're all using our platform for finding other businesses and interacting with them. Now, I think the advantage for us when we started, because we started recently, is कि हमने तो AI फर्स्ट ही सब कुछ सोचा, right? Because हमारा तो जीवन से ये था कि अब AI है, and we know the problem. How do we use AI from day one to actually solve it? And it is actually last 2 years have been very exciting because AI has also evolved. It is like, और जो पहले मूड्स लॉ होता था कि टेक्नोलॉजी 2x होती है, क्योंकि वो I think AI में तो और ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, right? And that has helped us also grow that much faster. So I talk about a few use cases, right? जैसे आपने बात करी कि तो अगर मैं मार्केट प्लेस की बात करूं तो हम गार्डन सेक्टर में स्टार्ट कर रहे हैं. आप मान लीजिए जैसे जयपुर में होलसेल मार्केट है, विल बी अराउंड 15-20,000 मैन्युफैक्चरर्स एंड सेलर्स. इन सबका कैटलॉग होता है. इनका कैटलॉग होगा 1000 कैटलॉग इमेजेस हर मंथ आएंगे और रिफ्रेश होती रहती हैं. नाउ फॉर एनीवन टू फाइंड समथिंग, जैसे मेरे को मैं कोई साड़ी ढूंढ रहा हूँ ऑफ पर्टिकुलर टाइप, it is very difficult, right, physically or digitally, to find the right seller and the right product. Using AI, what we are doing is we are actually digitizing this data, organizing this data, where AI helps us not only get the data in one place, but also tag it and then explain to the system ताकि अगर कोई ढूंढ रहा है तो उसको वो आराम से मिल जाए. So basically it's a recognition system which understands the user requirement and then accordingly recommends कि अच्छा this is the right seller or this is the right product for you. And like these recommendation engines, अगर आप देखिए पहले मतलब YouTube, Instagram, TikTok, इन सबके recommendation engine फेमस है. इनको बनाने में बहुत टाइम लगा है, बहुत स्केल लगा है, बहुत इंजीनियरिंग पावर लगी है. What AI has done is that even starting from a small scale, even starting with smaller data points, you are able to get there much faster, right? Another use case I'd say कि हमारे users हैं generally again smaller towns, tier 2, tier 3 cities, सब अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज में बात करते हैं. मार्केट प्लेस का काम होता है कि आपके बीच का इंटरेक्शन इजी करना, राइट? तो मान लीजिए देयर इज अ सेलर इन सूरत हु इज सेलिंग हिज प्रोडक्ट्स एंड उसके बाहर तो अभी वो लिमिटेड है थोड़ा लैंग्वेज से कि कहाँ वो बेच पाता है, एक्सेस से. अभी what we are doing for this, for example, this Surat seller is that like what these guys do is that they make videos to talk about themselves, right? उसमें मान लीजिए हिंदी में वीडियो बनाई,
that gets automatically translated and dubbed in say Telugu, Tamil, Malayalam, and dubbed, like not only translated but actually human-like voice. जहाँ जो सामने recipient है, he's not able to understand, really differentiate that much कि अच्छा ये AI generated है या human generated है. He can look at the products. If he likes something, then he can start chatting with this seller. By the way, that chat is also AI trained. So what it does is कि लोग की आदत है WhatsApp पे बात करते हैं. हमारे इंडिया में हर चीज WhatsApp पे चलता है. हमारा बॉट भी WhatsApp पे चलता है. जहाँ मान लीजिए तेलुगु जो buyer ने कुछ पूछा प्राइस क्या है in his language, that gets automatically translated into Hindi for the seller. He responds in Hindi and that gets translated there, right? So making this interaction easier and seamless is something that AI is helping us do. So there are many other use cases, but I think what has been powerful is to say even for a company like us, which is serving the small town people and tier 2, tier 3 people, in fact, ये सारे users, thing users already AI use कर रहे हैं without really knowing कि उन्होंने AI use कर रहे हैं. तो लेकिन या वो bot से बात कर रहे हैं, bot वाले video देख रहे हैं, factor. So I think possibilities are endless, and we are just getting started. So it's been